हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, दैट व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ टू अकर, फॉर ग्रोथ इन अ प्लान टू टेक प्लेस. And then we have also dealt about differentiation, de-differentiation and redifferentiation phenomenons. In this lecture we will be dealing about the development part. हम development of in a plant body के बारे में deal करेंगे and what actually development means in a plant body and कौन से ऐसे factors होते हैं जो कि development को promote कराते हैं plant में, वो हम उसके बारे में जानेंगे. Alright, so development का जब हम बात करते हैं, so we'll be dealing with the development portion. So development is actually a process in our plant body in which an organism goes through, various changes starting from the seed germination till its senescence. That means all the changes that are occurring in an organism from its seed germination till its senescence or old age conditions, उसको हम development बोलते हैं. Now there are various factors that actually controls the development in a plant body, and उन factors, वो factors जो होते हैं, that factors can be either intrinsic factors or that can be either the extrinsic factors. वो दोनों factors हो सकते हैं. Intrinsic factors basically includes two types. वो दो तरीके का हो सकता है development में. One is the genetical factors, जो कि genetic constitution होता है plant body का, basically include करता है. And the other is basically the plant growth regulators, PGRs जिसको हम बोलते हैं, या फिर commonly called as phytohormones or plant hormones, that are also responsible for contributing or promoting the development in a plant body. Alright, तो ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये genetical as well as with the help of PGRs और phytohormones के through ये regulated होते हैं. तो ये intrinsic factors होते हैं जो development को promote कराते हैं. Coming to the extrinsic factors, जब हम extrinsic factors की बात करते हैं तो extrinsic factors basically involves abiotic factors, वो सारे abiotic factors जो कि कहीं ना कहीं plant के development को promote कराते हैं. That basically includes factors like light, temperature, water, air or oxygen, nutrients that are being supplied to the plant body. वो extrinsic factors होते हैं जो कि solely responsible होते हैं in contributing the development of a plant body. Development को जब हम define भी करते हैं, so it is actually a process जिसमें कि it's actually a combination or a sum of two process, and one is the growth and the other is the differentiation. So the combination of growth and differentiation is solely or collectively called as development. Alright, so I'll be writing down here some of the features of development so you'll get an idea. So it is actually the changes that occurs in a plant body that starts from its seed germination and occurring till its senescence. And in other words हम बोल सकते हैं, so development कहीं ना कहीं sum होता है. It is the sum of growth and differentiation that takes place in a plant body. And it is actually controlled by several factors. Now these several factors can be the intrinsic or internal factors. तो ये plant growth regulators या phytohormones को include करता है. Genetical भी हो सकता है, PGRs भी होते हैं. So basically includes, इसमें abiotic factors आ जाएंगे like temperature, water, soil, nutrients, ऑक्सीजन, लाइट, ग्रेविटी. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स,
जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी को कंट्रीब्यूट कराते हैं. नाउ डेवलपमेंट जब हम प्लांट बॉडी में देखते हैं, सो डेवलपमेंट इन अ प्लांट बॉडी इज बेसिकली represented in the form of a phenomenon and that phenomenon is called plasticity. उसको हम बेसिकली प्लास्टिसिटी बोलते हैं. एंड प्लास्टिसिटी एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें कि प्लांट जो होता है दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी प्लांट्स में डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेस. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेस को देखते हुए प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी दैट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज हेट्रोफिली. वो हेट्रोफिली होता है. हेट्रोफिली मीन्स द काइंड ऑफ different leaf structures or different leaf morphologies that are observed in plants with respect to the kind of environmental conditions they are exposed to. तो जिस condition में वो exposed होते हैं, जिस भी environmental conditions को वो exposed होंगे, तो उस तरीके का वो habitat या उस तरीके का leaf morphology वो show करते हैं. Like one of the most common examples अगर हम heterophyly का लें तो heterophyly like aquatic habitat में कुछ और होगा किसी plant species का, और terrestrial habitat में वो अगर grow कर रहा है तो उसका किसी और तरीके का होगा. Alright. सो इसमें अलग अलग जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ 3 स्पीशीज़ विच आर कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर. सो दीज आर द स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ जो कि जुवेनाइल फेज में अलग तरीके का इनका लीफ मॉर्फोलॉजी होता है, वाइल इन एडल्ट फेज और मेच्योरिटी फेज में जब भी आते हैं तो दे शो अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ मॉर्फोलॉजी. सो दैट फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड एज हेट्रोफिली, विच इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स in response to the different kind of environmental conditions or environmental responses they are exposed to. So plants, they actually shows different forms of structure or morphology with respect to the variant environmental responses or conditions. तो ये चीज़ हो जाएगा इसमें. एंड प्लास्टिसिटी का अगर हम एग्जाम्पल लें, सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ हेट्रोफिली. दैट मीन्स सो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर में हमें हेट्रोफिली का फिनोमेना जो होता है दैट इज ऑब्जर्व्ड. और इसमें अगर मैं देखूं तो इन दीज प्लांट स्पीशीज लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जुवेनाइल फेज का लीफ कंसीडर करूँ एंड दिस इज़ अ लीफ ऑफ द मेच्योर प्लांट स्पीशीज़ या मेच्योर कंडीशन में इस तरीके के देखते हैं. सो लीफ इन जुवेनाइल फेज एंड दिस विल बी द लीफ इन मेच्योर कंडीशन और मेच्योर फेज. ऑल राइट, तो ये कंडीशन हो जाएगा. एक और एग्जाम्पल है एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ बटरकप. बटरकप एक ऐसी स्पीशीज़ है, एक ऐसी प्लांट स्पीशीज़ जिसमें कि जो लीफ होता है वो उसका एक्वेटिक हैबिटेट में इट इज़ डिफरेंट. एक्वेटिक हैबिटेट में उसका लीफ का स्ट्रक्चर अलग होता है एंड व्हेन दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस तो उनकी लीफ मॉर्फोलॉजी जो होती है वो अलग होती है. इफ़ वी ड्रॉ फिगर ओवर हियर, कुछ इस तरीके की लीफ मॉर्फोलॉजी हो जाती है इफ़ वी कंसीडर इट. तो दिस इज फाउंड लीफ स्ट्रक्चर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. This is a buttercup and leaf found in aquatic habitat. So as we can see, terrestrial habitat का जो leaf है वो काफ़ी broad and expanded type है. All right, and
having a greater leaf surface area. But in case of aquatic habitat, leaf का जो surface area है वो काफ़ी reduce हो चुका है in order to bear the jerking movement of the water and all. तो इसमें और इसमें leaf morphology में there is a difference, and this phenomena is actually called as heterophyty, जो कि commonly हमें दिखता है terrestrial habitat में अलग अलग तरीके का found in case of Botany. This is basically the different stages of development in a plant body. If we start with meristematic cell, हम meristematic cell से शुरू करें तो meristematic cell में जब cell division होगा तो cell division की वजह से there will be a plasmatic growth. ऑल राइट, तो वो जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ इस तरीके का होगा, देयर विल बी सेल एक्सपेंशन, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड इंक्रीज इन दी सेल शेप और स्ट्रक्चरल चेंजेस और सेल वॉल चेंजेस होते हैं. सो मेरिस्टेमेटिक सेल आफ्टर अंडरगोइंग सेल डिविजन विल रिजल्ट इनटू अ प्लाज्मेटिक ग्रोथ, एंड ग्रोथ का कहीं ना कहीं रिलेशन है सेल डिफरेंशिएशन से आफ्टर बीइंग एक्सपांडेड. तो इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल में ग्रोथ के बाद देयर विल बी एक्सपेंशन और एलोंगेशन ऑफ द सेल्स, देयर विल बी सेल डिफरेंशिएशन ऑल्सो, एंड इन्हीं दो प्रोसेस से विल अल्टीमेटली देयर विल बी मैच्योरेशन. इसमें मैच्योरेशन होगा सेल का, एंड आफ्टर द सेल विल गेट मैच्योर, और जब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी अटेन कर लेगा एंड वंस इट गेट्स मैच्योर एंड ओल्ड इनफ, तो उसके बाद देयर विल बी सेनेसेंस प्रोसेस. वो सेल का कहीं ना कहीं सेनेसेंस होगा, या वो पार्ट का प्लांट का कहीं ना कहीं सेनेसेंस होगा, दैट विल रिजल्ट इनटू इट्स डेथ. सेनेसेंस वो प्रोसेस होता है दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू डेथ टू टेक प्लेस. सो डेथ होगा एंड दिस प्रोसेस एक्चुअली कंटिन्यूज. तो स्टार्टिंग विद द मेरिस्टेमेटिक सेल जहाँ हमारा ये प्रोसेस शुरू हुआ था, इट हैज़ रिजल्टेड इनटू ग्रोथ. सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ हुआ, ग्रोथ की वजह से देयर इज डिफरेंशिएशन एंड एक्सपेंशन का प्रोसेस दैट हैज़ अकर्ड लीडिंग टू मैच्योरेशन. मैच्योरेशन विल रिजल्ट इनटू सेनेसेंस एंड डेथ ऑफ द स्पीशीज. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि किसी भी प्लांट बॉडी में अकर करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डीलिंग विद दी PGRs. हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे या फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड उनके डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में जानेंगे, दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ PGRs दैट आर फाउंड इन अ प्लांट बॉडी एंड व्हाट रोल डू दे प्ले in the growth and development of a plant body. Thank you.